बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उमर बेग, कैसे हैं आप लोग? How are you, my people, my family? Today we learn how to create table space in Oracle Database 19C, InshaAllah, and this is method 1. आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से टेबल स्पेस बनाई जाती है Oracle Database 19C में, इंशाल्लाह। और ये पहला तरीक़ाकार है। ओपन SQL Plus खोलेंगे। कनेक्ट विद sysdba, कनेक्ट होंगे sysdba से। Now we will write this query. अब हम ये query लिखेंगे। Now here APEX.DBF is a table space name which you can define from your choice. Suppose so it is already exist. Suppose you choose Apex, then query will be look like this. यहाँ पे जो है वो APEX.DBF जो है वो टेबल स्पेस का नाम है। ये टेबल स्पेस का नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अगर आप उसका नाम एपेक्स देंगे टेबल स्पेस का, तो क्वेरी जो है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। Now I have to change the name of table space. The name which we define here, which is a table space name, we will provide a same name here as well. जो भी हम टेबल स्पेस का नाम देंगे, जो कि ये है, तो हमें यहाँ पे भी उसका यही नाम देना पड़ेगा, तो फिर ये बनाएगा। Then it will create a table space. Now table space created. टेबल स्पेस जो है वो बन चुकी है। Furthermore, if you do not use AUTOEXTEND on next 1M, then query will be look like this. अगर आप AUTOEXTEND का स्क्रिप्ट नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो क्वेरी जो है वो कुछ इस तरह की होगी। Now we will check table space by navigating to this path. अब हम टेबल स्पेस देख लेंगे इस पते पे जाके। So now it is created. ये बन चुकी है।
and we can check it through this command as well while connecting with sys user. हम इस कमांड के ज़रिए से भी चेक कर सकते हैं और ये sys के यूज़र से कनेक्ट होने के बाद SQL Plus में। Now it is available. ये यहाँ पे मौजूद है। APEX.DBF is showing here as well because it is available. That's why it was creating a trouble. APEX.DBF भी यहाँ पे आ रही है, ये मौजूद थी, इसी वजह से उसने एरर दिया था। So this is it. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।